the money that you want, the companies that you want, the opportunity that you want and that you seek is out there. It's those people they don't know कि तुम भी हो जो इसके capable हो. Not like people don't know how to do shit. It's just other people don't know that they know how to do shit. Need the job in next 60 days. We're gonna come to the point. We're not gonna think about the no's. If you need to go ahead, then you need to do extra stuff. It's true. You gotta do extra to get that extra. But extra क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कब करना है? कैसे कैसे करना है? And अगर कोई हमारे साथ कर सकता है तो that would be the best. So if you know all of that, getting to 1 lakh mark becomes simple, but not easy. जैसे I know a lot of people will not watch this video till the end, and it is valuable, but they will not. So what you are going to watch next, I'll give you a little bit of context. So we have this group, we call it 1 lakh community, in which we talk about all of this, कितना करना है, क्या करना है, and all of that. And this call is actually one of the amazing calls that we had a few days ago, and that's what I'm sharing here. And we're going to talk about 3 very important things in this, but I'll tell you only one right now, which is how to know your worth. So if you know video editing, coding, graphic designing, whatever your skill is, a company A is paying you 30,000, a company B is paying you, let's say 70,000. So how to know what is your worth of your skill set, and that is one of the most important thing. So continue the video. LinkedIn की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जाके लोग खुश कम होते हैं, डिप्रेस ज्यादा हो जाते हैं. And that's something that I have seen quite a lot. Like उनके पोस्ट ही होते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, and then I got this job or whatever, right? And like वही feeling कि like we are not getting it, why are these guys getting it? It's just a subconscious thing, but it happens quite a lot. It's just other people don't know that they know how to do shit. That means कि तुम्हें coding आती है, but enough लोगों को बाहर नहीं पता कि तुम्हें आती है, right? It can be marketing also, and that's where the scarcity problem exists. जहाँ पे इंडिया स्पेसिफिकली मैंने ये नोटिस किया, बाहर इतना नहीं, बाहर थोड़ा शायद 50-50 की तरफ 60-40 में भी, बट इंडिया में ऐसा है कि मुझे 20-80 लगता है. 80% लोग जो हैं जो कि कैपेबल हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी डिजर्व करता हूँ मोर सैलरी, मोर स्टफ, लाइक मोर मनी, मोर पर्क्स, बेटर कंपनी, जो भी गोल्स हैं हमारे, बट किसी को पता ही नहीं है कि उनको आता है ये सब, राइट? एंड दैट्स वेयर द डिफरेंसेस स्टार्टेड हैपनिंग. शुरू के 1-2 साल जो होते हैं करियर के कंपनीज के, वो बहुत वो होते हैं कि हम लोग कोर्स पे ध्यान रहे हैं क्योंकि कॉलेज ने कभी कुछ सिखाया, खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करके किसी तरह इंटरव्यू क्रैक हुए. दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ अस, राइट? मोस्ट ऑफ अस हु डजंट हैव आईआईटी टैग और एनआईटीज और इवन लाइक उसके भी नीचे वाले कॉलेज, हमारे होते हैं एकदम जीरो ग्रेड कॉलेज. एंड देन कॉलेज ने कुछ कभी किया नहीं, प्लेसमेंट लग भी जाती है तो वो कॉल सेंटर की प्लेसमेंट लगती है, या फिर और मे बी इवन मोर बेसिक खराब जो कंपनीज होती हैं. बट आइडिया कि हम लोगों ने मेहनत करी, एक कंपनी क्रैक हो जाती है किसी तरीके से, चाहे हम लोग इंस्टीट्यूट से पढ़ के करें, खुद से पढ़ के करें, एंड देन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी में 1-2 साल आके अच्छे से सीख लेते हैं. बट व्हेन यू नो यू आर डन, लाइक दैट्स द मैक्स 6 to 2 years डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड द कंपनीज की दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. उसके बाद हमें समझ नहीं आता है कि लाइक हाउ टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज़ नोबडी टोल्ड अस हाउ टू डू दैट एक्चुअल मार्केटिंग ऑफ आवरसेल्व्स, right? Even like we don't have to be famous, we don't want to be influencers, we don't want to get brand deals, but किसी के सामने जाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, even negotiation करना, like we have never gotten to that point where somebody is teaching us to do that, right? And that's where I feel कि 20% even मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 90-10 होगा, or even more, I don't know. The point is कि we need to learn that, and we don't want to be influencers at the end of the day. We just want to get our worth, right? जो भी हमारी मार्केट में वर्थ है, एटलीस्ट उसके जितना हम लोग पास जा पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जो कि प्रोबेबली हमसे बेटर कोडर नहीं है, राइट? यहाँ देखा है, ऑनलाइन पता है उनको, बस वो राइट टाइम और राइट जगह पे होते हैं. तो हम लोग सोचते हैं हमारी किस्मत नहीं है, बट वो राइट टाइम राइट जगह पे होने के लिए भी काफी एफर्ट लगते हैं, जो कि उनके लिए प्रोबेबली अनकॉन्शियसली होते हैं, बट हमें कॉन्शियसली मारने पड़ेंगे, बिकॉज नोबडी इज गोना सेव अस, राइट? हम लोग 4 साल बाद फिर से ये नहीं बोलना चाहेंगे कि यार हमारा कॉलेज खराब था, हमारी गलती नहीं है, व्हाटएवर व्हाटएवर, राइट? इट्स नॉट नन ऑफ दैट. हियर्स द थिंग, फर्स्ट वी नीड टू इवैल्यूएट, जब भी हम लोगों ने फर्स्ट 2 कॉल्स में किया, कि हमारी एक्चुअली जरूरत क्या है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप दैट विल मेक अस क्लोजर टू दैट 1 लाख मार्क. और हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया क्यों हम लोग उसके पास जाना चाहते हैं, ताकि वी गेट द हेड स्पेस. और बड़ा सोचना है, या 1 लाख से 1.5 लाख जाना है, 2 लाख जाना है, दैट्स हाउ इंडियन मार्केट में वहां पे खत्म होना शुरू हो जाता है अपॉर्चुनिटीज का, लाइक 1.5-2 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख महीने के आसपास, राइट? एंड दैट्स द ह्यूज डिफरेंस ऑफ वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. मोस्ट ऑफ योर केसेस इट विल बी गेटिंग दैट जॉब. So, and ऊपर से एक और criteria, is there a fast need or is there slow need? So fast need is can be anywhere under 60 days, right? We know our company is paying us less, we want to reach to our worth as soon as in next 60 days. So there is a separate way of doing it, and or maybe even less, right? And 30 days also. There are only 3 things that we need to do at the end of the day. First, presence. So we need to be just present where other people are hanging out. So क्योंकि other people से मेरा मतलब है जो कि हमें वो opportunities दे सकते हैं. That's why we started creating this list. समझें कि कहाँ पे लोग hang out करते हैं, कौन सी कंपनीज हैं, LinkedIn पे क्या लिखा जा रहा है, वो लोग क्या लिख रहे हैं, probably if they are writing, right? उनके circles में कौन लोग हैं. So just be present for and consciously for what we want to achieve, right? So and यही step करने से हम लोग probably 50-60% लोगों को पीछे छोड़ देंगे, because nobody like not a lot of people does it, right? So presence is very important, and consciously presence in these pages, these platforms, these areas. And if we can, offline events work great. They, I think, अभी भी आज भी better होंगे. But the idea is कि वहाँ पे भी बहुत कम लोग जाते हैं. So just being in the right room was also like a nice idea or a great idea. And but उसका ही online version भी है जो हम लोग अभी try कर रहे हैं. Right? It's the same thing that we are trying to do. Just trying to find more people who are in the same space, 2 steps ahead where we want to go, or even like just in the same room so that we can be a little bit more known. So first is presence. The second one is portfolio. So whenever somebody asks about anything, so think of yourself as a sort of a salesperson, right? अपने बारे में पता होना चाहिए. तो उसको दिखाने के लिए आप कोडिंग के स्पेस में, मार्केटिंग के स्पेस में, जनरली अपनी स्किल्स शो करने के लिए पोर्टफोलियो इज द थिंग.
राइट? तो जितनी ज़्यादा तुम चीज़ें करोगे एंड ऐसा कई बार होता है, हम लोगों ने कंपनीज़ में बहुत प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, बट इंटरव्यूज़ में जब पूछ लिया जाता है, सो वी आर स्टक देन वी हैव टू थिंक। सो द आइडिया इज़ कि वी नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो जस्ट इनग्रेन्ड इन आवर हेड कि हम लोगों ने क्या काम किया, उस पे क्या टेक में काम किया, कितने लोग थे, मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी थी, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। And that thing needs to be published somewhere as well because people are always looking for better people. And this is what I understood, right? So imagine, मुझे अभी 2 weeks ago I wanted to hire a person, and when I put down that application on Indeed, मुझे 200 application है, and I reached out to each one of them, ठीक है? And 200 application in just 1.5 days. I have to stop it कि मुझे और नहीं चाहिए, let me evaluate this, right? And then 1.5 दिन में 200 applications, I reached out to every one of them कि this is the Google form that you have to fill up. Probably like 15 of them filled up, like 40, 15 number था, and उसमें से बहुत कम लोग like even अपने बारे में बता पा रहे थे Google form में, right? And just because I did it like आज 1.5 दिन खत्म हुआ, and then I gave them like 2 to 3 days to fill up that Google form. That was not happening. So if you're taking like 2 to 3 days just to tell me about yourself कि तुमने क्या projects किए हैं, even just showcase it to me, you're not gonna land anywhere. So the point is कि think of it as like filters. Think of it as जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो like there are filters, right? So there are like levels of filters. You need to be just doing more. So just having presence on the social media platform for ourselves will make you walk to that first filter जहाँ पे काफी सारे लोग वहीं रह जाते हैं, right? And then you have a portfolio ready instantly. Somebody asks you, instantly message, right? Instantly text, instantly conversation के अंदर ही। और ये तो वैसा होना चाहिए सेल्समैन की तरह कि रात को 2 बजे उठा के भी बोल दिया कि हे क्या किया था, तो एकदम ऐसे कि फीचर्स, if you see the people who are working in software industry, yeah, even in any industry, good sales people, like they can have their scripts ready. So it's more about those things, right? तो हमें उस लेवल पे आने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्राई करना है, एंड थोड़ा थोड़ा ट्राई करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज हैव एवरीथिंग रेडी। एंड मैं ये चीज नहीं बता सकता हूं बिकॉज़ योर पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंडिविजुअल टू यू, राइट? आई कांट टेल, right? I can tell about the presence which we're going to talk about. Portfolio as an individual, I can't do that. So if it's you're a coding person, it's going to be on GitHub and then places like this. The third thing is we need to do promotion. So presence, portfolio, promotion, and promotion is where you will leave like 90% of the crowd, right? Nobody does. Nobody actively talks about themselves. If you're even if you're introvert, which a lot of us are, it kind of becomes very easy after you do it like 5, 6, 10 बार। तुमने देखा होगा कि जब मार्केट खराब होती है तो probably तुम्हें नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज्यादा देने पड़ते हैं, राइट? तब लोग तुम्हारी पर्सनालिटीज को भी जजमेंट करने लग जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गोना बी स्टैंडिंग आउट इन गेटिंग मोर पैकेज। बट अभी मार्केट खराब है और हमें ऐसे ही सोचना है, राइट? द फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज आर गोना बी लाइक बहुत बेकार। The idea is if you're giving interview, it's gonna suck. If you're gonna be on doing the sales calls, it's gonna be like it's not gonna be cool. It's not gonna be good, right? And that doesn't mean कि तुम्हें कुछ नहीं आता है. That means कि तुम्हें जो आता है वो तुम्हें बताना नहीं आता है, and that's just totally fine because first ever piece of code that we have written was shit, and that's how everything works. Anything new that you do, you're gonna suck. Simple. So it's all about putting more reps in without or with the least amount of judgment on yourself as much as you can, right? अभी जब से हम लोगों ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, राइट? हम लोग इनको डीएम्स करने वाले हैं, यू गाइस न्यू इट, बट 100 में से प्रोबेबली 20 लोग रिप्लाई करेंगे, एंड दैट विल शुड बी फाइन विद यू, राइट? एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे ही चीजें काम करती हैं। बट द आइडिया इज कि एक तो प्रेजेंट होना है इन प्लेटफॉर्म से, देन यू हैव योर पोर्टफोलियो रेडी, व्हिच मींस पार्ट ऑफ इट इज आल्सो हैविंग योर लाइक थिंग्स सेटअप जो भी तुम्हारी बेस्ट चीजें हैं दिखाने के लिए। देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस इज कि एक मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं से मैंने देखा था, प्रॉब्लली वीडियो थी समथिंग, द गाय सेड कि द मनी दैट यू वांट, the companies that you want, the opportunity that you want and that you seek is out there. It's just those people they don't know कि तुम भी हो जो इसके capable हो, right? वो है वहाँ पे, वो jobs हैं, right? Even if the market is bad, even if the world war is going, people are making money, right? But it's just कि उन लोगों को नहीं पता है कि तुम्हारे skills क्या हैं, तुम्हारी capabilities क्या हैं, and that's all that we need to try to take care of, right? And इसके दो ही reason रह सकते हैं. One is you're not confident about your own self, right? And the second thing is they don't know that you exist. Simple. Either one of those things. ठीक है? जब confidence की बात आती है तो only two things matter. One is कि you actually don't know how to do it. You actually don't have a core skill that is really good, and which should be your first accepted thing अगर वो ऐसा है. But वो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कितना आना चाहिए इतना मिलने के लिए? For that you need to look at other people, what they have been developing, उनके portfolio कैसे दिख रहे हैं. अगर obviously everybody lies, but just get into it, right? कि अच्छा इतना आता है, इस कंपनी में है, इतना मिल रहा होगा इसको, probably Glassdoor से हम लोग सर्च कर सकते हैं, Indeed से, Glassdoor से, wherever. बट तो जब तुम ये ऐसे यूज लाइक ऐसे केस स्टडीज देखोगे ना, और ये देखने में 5-7 मिनट लगते हैं, राइट? क्या आदमी है, उसका क्या पोर्टफोलियो है, कौन सी कंपनी में काम करता है, and he must be getting this much amount, right? You see it one person, then you see it bunch of them, 10, 12, 15, 20, you'll start noticing a pattern. Okay, तो ये होगा रिसर्च का साइड। जब तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ ठीक मुझे आता है, ये तो इसके पोर्टफोलियो है या ये भी जो भी इसका प्रोजेक्ट है, ये मैं कर सकता हूँ, आई हैव कॉन्फिडेंस, राइट? दैट्स व्हेयर यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। तो वो पहला पार्ट इसलिए कॉन्फिडेंस है, इसलिए लैक ऑफ स्किल्स नहीं। लैक ऑफ स्किल्स हो सकते हैं, बट उसके प्लस में तुम्हें मार्केट का भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, राइट? सो आइदर कॉन्फिडेंस का जो लैक है वो लैक ऑफ स्किल से आ रहा है, या फिर लैक ऑफ रिसर्च से आ रहा है, राइट? यू डोंट नो व्हाट यू इवन व्हाट यू आर वर्थ ऑफ, राइट? तो ये दोनों सॉर्ट करने के लिए एक तो यही है, रिसर्च करना है, बहुत सारे लोगों को देखना है,
बट ऐसे लोगों का जर्नी देखना है कि कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया, फिर कहाँ कहाँ जंप किया, कितने टाइम बाद किया, उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं तो पोर्टफोलियो भी होगा, गिटहब तो होगा ही उनका, राइट? और लोग पब्लिक नहीं करेंगे प्रोबेबली लिंक्डइन पे, बट यू कैन फाइंड इट बाय सर्चिंग, राइट? तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ऐसा कुछ सिमिलर किया है या इससे बेटर किया है, एंड अगर वो इस कंपनी में तो उसको इतना मिल रहा होगा व्हिच ही स्टिल गेटिंग इन दिस बैड मार्केट, दैट मींस द कंपनी हैजंट फायर्ड हिम, सो दैट मींस आई एम आल्सो गुड एनफ, क्योंकि मैं तो वो कर सकता हूँ ना। सो दैट्स अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस, एंड द अदर पार्ट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर कि दे डोंट नो अबाउट यू, दे डोंट नो दैट यू एग्जिस्ट। एंड इसमें एक पार्ट होता है जिसमें लैक ऑफ स्किल वाला जो पार्ट है, एंड इमेजिन कि तुमने ये सब पता लगा लिया, तुम्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर सकता, इसके पोर्टफोलियो तक मैं अभी मेरे पास शायद उतने स्किल्स नहीं है, राइट? इफ दैट इज द आउटकम ऑफ दैट रिसर्च, then just make more projects. Like it sounds simple, but you can do it on your own. Like there is nothing in this world that you need the company for. You can create your own flow, you can create your own like पूरा project खुद से, और probably just know it कि how it goes. अगर तुम्हें जल्दी है, let's say तुम project नहीं बना सकते हो, तो तुम बहुत ज्यादा उस project के बारे में पढ़ सकते हो, and it only takes like about a weekend of rigorous researching to know कि ये project बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, right? And वो bullet points note करके उनके बारे में पढ़ के you can actually get into the interview and talk about it, because they don't know, they don't need to know, right? मैंने कंपनी में बनाया था, कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, आई कांट वी कांट पब्लिश इट ऑन गिटहब, ठीक है, बट मैंने ये काम किए थे उसके अंदर, मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी, एंड यू डू इट, यू से दोस थिंग्स बिकॉज तुमने 3 दिन उसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ा है जो कि शायद उतना ही आता होगा एंड के लोगों को भी, जिसने एक्चुअली प्रोजेक्ट किया है। दैट्स हाउ लाइक यू नीड टू गो अबाउट इट। अगर बहुत ज्यादा जल्दी है, बट अगर लेट्स से तुम्हारे पास 3-4 मंथ्स हैं, यू आर प्रीटी मच श्योर, बट देन एक्चुअली बिल्ड दैट प्रोजेक्ट, राइट? एंड दैट्स वन वे, एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर जस्ट कि हाँ मुझे 3-4 महीने में 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक प्रोजेक्ट बनाना है इतने बड़े लेवल का, शायद मैं ना बना पाऊँ, या वो 4 दिन पहले बनते हैं फिर उसके बाद छूट जाता है बिकॉज़ देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड स्टफ, राइट? अ, ये यही वाला जो पार्ट है, यहीं पे लाइक काफ़ी सारे लोग रह जाते हैं बिकॉज़ दे डोंट वांट टू डू समथिंग दैट इज नॉट गिविंग देम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? अगर किसी चीज़ के लिए कंपनी पैसे नहीं दे रही है, वो करना इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू योर 4 मंथ्स का जर्नी, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अवार्ड मिलने वाला है। बट वो 4 मंथ्स में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन द स्टार्टिंग, राइट? 12 साल हम लोग स्कूल में बिताते हैं इस कोशिश में कि शायद हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एंड दैट्स लाइक नॉट वर्किंग ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, right? And that's a journey that you followed with because you've been told to. And now it's the time to spend next 4 months, 12 साल हो गए, नेक्स्ट के 4 मंथ्स बिता के अगर एक पोर्टफोलियो ही बनाना है, उसके लिए तुम्हें कोई पे भी नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके लिए भी कोई प्रोसेस भी नहीं है, लाइक ऐसे स्कूल में भीड़ों की तरह बांधा नहीं हुआ है तुम्हें, राइट? तो यू आर अलोन आउट दैट, तो अगर वो नहीं कर सकते तो यू डोंट डिजर्व दैट, लाइक दैट्स हाउ आई थिंक, बिकॉज इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट एवरीबॉडी इज डूइंग around you, then you need to be like that's where you belong. If you need to go ahead, then you need to do extra stuff. So you need to do a lot of stuff to be there, right? And वो अभी एकदम डबल ही हो गया, probably डबल से भी ज्यादा, right? And somehow somewhere someone will notice, right? And वो बचपन में वो like कहानियां कहानियां नहीं डांट मिलती थी ना कि यार मेहनत का फल नहीं जाता कभी खराब, और वो सब ट्रू है। एंड यू नो टू बी ऑनेस्ट, एक और चीज है जो कि लोग हमेशा बोलते थे बचपन में, तुमने भी सुना होगा, अभी भी सुनते ही होगे मेरी तरह, कि लाइक जल्दी उठा करो सुबह, बहुत बहुत फायदे होते हैं। अब जाके समझ आया कि यार ये सच होता है ये एक्चुअली में सच है। अम, वो बोरिंग वाली चीज़ों में ही इंटरेस्ट और रिजल्ट मिलते हैं, बोरिंग चीज़ें रोज़ करने से, एंड वो बोरिंग चीज़ें ही हैं जो सोसाइटी हमें बता रही है कि नहीं करनी। पहले हमें बताया कि बोरिंग बनो, और जब बोरिंग बन गए हैं, तो उस चीज़ों के रिजल्ट नहीं पता ना, जब हम उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो एवरीबॉडी इज टेलिंग अस अनकॉन्शियसली, एवरीबॉडी इज टेलिंग अस, योर सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज एडिक्टेड, लाइक नथिंग विल पुश यू टू ब्रिंग दैट रिजल्ट आउट ऑफ यू, unless until those things think really like they are in your situation. Even like your parents will not push you, your siblings will not push you, unless until you find a person, friend, या अपना पार्टनर या whoever whatever that is in the same position who understand कि हमें बहुत कमी है और हम लोगों को ये चीजों में काम करना है, you're not gonna get the support from anywhere. Not getting the support as well as trying to figure out what is that thing that will get you that 1 lakh mark. It's the sole reason I started this community. We call it actually 1 lakh community. So if you want to join that, the link is in the description. But the reason that we have this community is, hey, we will get each other support. We will have weekly calls with us, maybe more people. And you know, you're going to get all the resources in that as well. So link is in the description. Join that and back to the video. The idea is कि तुम्हें अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना, so you have to take the step, and that's all motivation and whatever, but the idea is कि वही वो बोरिंग चीजें ही रिजल्ट लेके आती हैं। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, राइट? जिम जाना इज लाइक एक टाइम के बाद बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वी नीड टू फाइंड दोस वेज कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वो सब मैं नहीं घुसूंगा, बट द आइडिया इज कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, द होल पॉइंट इज, राइट? सो इसके लिए 2 ही रास्ते हैं, लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड इज फ्री, राइट? जो भी तुम्हें नॉलेज चाहिए सब बाहर है, सब जितनी मर्जी तुम यूट्यूब वीडियोस देख लोगे, बट तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, व्हाटएवर यू नीड टू एज डीप एज यू वांट टू लर्न, जितने भी ये कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा, रेडिट पे मिल जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज mentorship is also fine, it's all about energy, but energy is how you spend your life, whether it's by time, whether it's by money, right? If you can afford, and if the mentor is good, you need to spend that money on him to make sure कि वहाँ तुम्हारा टाइम रिड्यूस हो जाए, राइट? जो भी तुम 4 साल में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, प्रोबेबली 1 महीने में कर लो, बिकॉज ही हैज वॉक डाउन द पाथ और शी हैज वॉक डाउन द पाथ, राइट? एंड दोज आर द 2 थिंग्स, आइदर तुम खुद कर लो या किसी को पैसे दो तुम्हें कराने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग आवर होल लाइफ, स्कूल, कॉलेजेस, वी वर पेइंग मनी टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे हमें कुछ मिल जाए,
और हमें हमारा थोड़ा पाथ ईजी हो जाए आगे का या फास्ट हो जाए, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली पेइंग समवन फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यू लाइक ये क्यों दूं मैं किसी को? एंड देन these things are general, it's normal, it's understandable, but you need to understand is how everything has been working in the human world around us, and especially in the place जहाँ पे हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे. यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन लाइक एवरीवेयर दैट यू गो, लाइक जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब वाला सिनेरियो है, तुम्हारा कोडिंग वाला सिनेरियो है, देन अभी मैं मार्केटिंग का अपने एंड से बता सकता हूँ, मार्केटिंग वाला सिनेरियो है. Everywhere that you go, you will find 20, 30, 200 more people just like you who want the same stuff, who want the same end result, and they're standing beside you having the same opportunity, right? तो मैं जो मेरी फर्स्ट एवर जॉब थी, that was paying me 40,000 a month, in hand. Yeah, actually everything was in hand. पीएफ ही था बस 1,500 का. बट द आइडिया इसकी, वो जो 40,000 मुझे दे रही थी, तो उस कंपनी में मुझे जाके बस इतना पता लगा, वो रिक्रूटमेंट टाइप फॉर्म थी, ठीक है? दे वर हायरिंग engineers and those silicon engineers, like embedded engineers. They were like, they're still being the top in the top paying category of engineers, like really the top coders, जिनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, राइट? लिटरली वहां पे मैंने पैकेजेस ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ पे आंखें खुल गई, रियल में देखे, बिकॉज आई वाज दैट डिजिटल मार्केटर लाइक कंपनी का, तो आई अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है ऐसे लोग ढूंढना जो कि उस चीज के लिए कैपेबल. एंड लाइक कंपनी वाज स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ देयर हेड कि हमारे पास इतना बजट है, बट उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे, एंड अच्छे लोग मिल रहे थे तो उनको बात नहीं करनी आती थी, राइट? बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटर था, तो मैंने एप्लीकेशन इतनी देखी है वहाँ पे जहाँ पे लोगों को अप्लाई नहीं करना आ रहा, उनको बोलना नहीं आ रहा कि फाइंड माय रिज्यूमे हियर और व्हाटएवर, राइट? टेक्निकली दे कुड बी गुड, बट द आइडिया इज कि उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो बताना आना चाहिए, right? And that's where all the difference is, right? And I got that job in 2021, so that means the market was really good back then also. But आज भी इस कंपनी से like known में हूँ, टच में हूँ, सेम इंडस्ट्री का पता है. But the idea was कि मुझे ऐसे आंखों में, एक तो obviously like I was paying 40,000 an hour when I was posting about jobs who were paying like 4 lakh a month. So like इतना बड़ा गैप के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कंपनी के पास पैसा है और मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं. But let's, so the thing is कि I learned a lot कि मार्केट क्या है, और because they were like top engineers, so the idea is कि वो जो बोर्ड चिप कंप्यूटिंग एनवीडिया फिर उसके बाद बूम अप कर गया एंड एवरीथिंग बूम्ड अप उसके बाद, उस टाइम भी कर रहा था ऑब्वियसली, बट या वहां पे मुझे समझ आई कि ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं. एक तुम्हें आना चाहिए, दूसरों को बताना आना चाहिए, वो तभी हो सकता है कि जब तुमने सीखा हो, एंड सीख के भी कॉन्फिडेंस हो, या फिर किसी से सीखा हो, खुद से सीखा हो या किसी से सीखा हो कि ये काम कैसे करना है. मेरा आइडिया ये था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में किया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ही कोर्स बनाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मैं आगे मेंटरशिप उसका करता हूँ. बट मुझे इतना समझ आया कि कोर्स के सिखाने का कोई फायदा ही नहीं. Like there are hundreds and thousands of free resources out there, but nobody is teaching anybody to get that. वो कहावत है ना कि teach a man to fish, he will not be hungry for the whole of their life. वो कोई नहीं कर रहा है. Even then the institute who are teaching people to code, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, या हम तुम्हारी जॉब लगवाने, बट बताएंगे नहीं हम तुम्हारी जॉब कैसे लगवाएंगे, you know. So that is where the gap I felt like I can contribute more. So ये हो गया पहले problem का solution जहाँ पे we are not confident, right? And the second part of that is they don't know that you exist. The money exists out there, the companies, the opportunities, the people exist out there, but they don't know that you do. तो उसका सोल्यूशन वही जो हम लोगों ने बात करी, वी नीड टू फाइंड आउट प्लेसेस जहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं, वी नीड टू बी देयर, वी नीड टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ वी सेल आवरसेल्व्स बेसिकली, राइट? एंड वी स्टार्ट डूइंग ईच वन ऑफ दीस थिंग्स ऑन like every day consciously, you will get those things because those are low hanging fruits. Just कि लोगों को पता ही नहीं कैसे बात करनी है, क्या मैसेज करने हैं, इन लोगों के पास जब जाना है तो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है. एंड जनरली जो दूसरे एंड पे रहता है कि अच्छा रिज्यूमे बनाना सीख लेते हैं हम लोग ऑनलाइन 50 तरीके से यूट्यूब वीडियो या सब कुछ देख के, एटीएस वगैरह से पास से होना है, सब रिज्यूमे हो जाता है, राइट? बट जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? तुम्हें अपने पोर्टफोलियो के बारे में एक तो बनाया है, एक पता होना चाहिए, वो सच हो या फिर झूठ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, व्हाटएवर मे बी द केसेस. बट इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ चीजें सोचनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है. इंटरव्यू के बाद क्या करना है, लाइक उन लोगों को मैसेज करना है, नीड टू बी प्रोएक्टिवली वर्किंग. एंड तुमने देखा होगा ये चीज इंटरनली बहुत अच्छी काम करती है, राइट? तुम ऑफिस में काम करते हो, जो चीज जो बंदा प्रोएक्टिव होता है ना हर चीज को लेके, एक तो ये लोग होते हैं कि हाँ हम लोग सुबह ऑफिस पहुंच जाएंगे, हमें हमारा पाइपलाइन दिख जाएगा, हमें क्या काम करना है, वी विल डू दैट फॉर दैट डे, विल कम बैक, अगले दिन जाएंगे, फिर पाइपलाइन मिल जाएगी, घर आएंगे, एक सर्कल स्टार्ट. बट जो बंदा वहां जाके फिर देख, अच्छा मैंने ये किया है तो मेरे साइड वाले कलीग ने ये किया होगा, चलो लेट मी हेल्प हिम, राइट? मेरे अच्छा मेरे मैनेजर को प्रॉब्लम ये चाहिए, तो लेट मी फाइंड सम बेटर सोल्यूशन, बेटर यूआई, बेटर समथिंग, एंड गिव मी माय सजेशंस, राइट? वो टॉप ऑफ द हेड नहीं कि 5 मिनट पहले रिसर्च करके, बट एक्चुअली डूइंग, पुटिंग इन दैट वर्क एंड कमिंग अप विद अ बेटर सोल्यूशन, लाइक रियल बेटर सोल्यूशन, राइट? नॉट जस्ट बिकॉज़ द मैनेजर सेड इट, राइट? तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो होते हैं ना, प्रोएक्टिवनेस होती है, वही डिफरेंस है बस ये सेल्समैनशिप में और अपनी कोर्स के बेचने में, राइट? सो जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्शनेबल स्टेप, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग हैंग आउट करते हैं, एक है लिंक्डइन, एक है ईमेल्स. यही दो चीजें हैं जो कि प्रोफेशनल्स रोज खोलते हैं, तो हमें भी यहीं पे अपनी प्रेजेंस बनानी है, सिंपल. लिंक्डइन और ईमेल्स, ये एक्शनेबल चीजें हैं, अभी सब इधर उधर का मोटिवेशन सब खत्म, ठीक है? सेकंड थिंग इज कि इन प्लेटफॉर्म पे अपनी एस्टैब्लिशमेंट सेटअप करनी है. दैट मींस तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक तो पता करना है कि काम कैसे करते हैं, जैसे ईमेल, राइट? काम कैसे करता है, कुछ भी नहीं. Two things. One thing, you need to know the limit of emails. So, एक personal email ID से रोज के 25 to 30 emails are comfortable, is a comfortable position, right? Where you can send those emails, number of emails. You're not landing in spam, right? So that's the max number. लोग emails कब खोलते हैं, right? Either सुबह 8 बजे या लंच वाला जो टाइम होता है 12 से 2 का, जो busy, like really busy people होते हैं, right? Not like
जो कि हर जिनका नोटिफिकेशन ऑन होता है वो नहीं, जिन लोगों को हमें पहुंचना है जिनके पास, वो कब अपना ईमेल खोलते हैं हमें वो जानना है, राइट? मोस्टली 3 टाइम्स डे वेयर दे आर एक्टिवली लाइक जस्ट गोइंग थ्रू द ईमेल। एचआर तो हमेशा ईमेल पे एक्टिव रहता है, ये रहती है, बट हमें देखना है कि बाकी लोगों को कंसिडर करके हमें अपना रूटीन सेटअप करना है कि इस अच्छा सुबह उठा 2 ईमेल भेज दिए, 3 ईमेल भेज दिए, राइट? दोपहर को ब्रेक लिया बिकॉज़ दे वर आल्सो टेकिंग अ ब्रेक, सो वी विल आल्सो सेंड लाइक 2-3 ईमेल्स देन। एंड देन शाम को व्हेन दे आर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, दे आर चेकिंग देयर ईमेल्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सीटीओस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीड इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक टीम लीड्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दीस गाइस आर एक्चुअली इन द लाइक हम वो एक्चुअल काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड ईमेल्स उनका source of communication होता है, not just every single like minute like notification, good ones I'm talking about, like good people who are focused on productivity, right? तो email काम कैसे करता है, ये तो चीजें, and the third thing is it needs to be really precise on point, right? You don't need to hang around the bush कि अच्छा मैं my name is Jatin, I work here, and then nobody cares, we can talk about you, but the idea is कि email लिखना कैसे है, and I have the templates that I have sent at that point of time, तो मैं probably उनके screenshot भी next time दिखा दूँ। On top of that, the email, because I've been sending probably like 100 to 100 emails a day, तो और वो उसको ट्रांसलेट कैसे करूँ मैं जॉब वाले सिनेरियो में, वो भी मैं दिखा सकता हूँ, राइट? सो वी कैन स्विच, वी कैन सी कि क्या चीजें लिखनी है, बट एट दिस पॉइंट जस्ट नीड टू नो कि चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है? क्योंकि हर बार अगर तुम ये सोचने बैठोगे कि क्या लिख के भेजूं, इट्स गोना बी लाइक रियली टास्क, लाइक बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। एंड वी डोंट नीड टू डू दैट, वी डोंट नीड टू बी इन अ पोजीशन, यू जस्ट नीड टू नो कि हमें ये करना है, इसको इस तरीके से करना है, दिस इज द टेम्पलेट, आई जस्ट नीड टू सेंड दोस मैसेजेस, सिंपल, राइट? दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट ईमेल। द सेकंड थिंग इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे 2 ही चीजें होती हैं, एक तुम्हारा कंटेंट जो कि काफी लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, दैट्स वन। सेकंड थिंग इज मैसेजेस, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स फॉर अस, राइट? हमें अगर हम लोग कंफर्टेबल हैं फ्रॉम द स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कंटेंट एंड आई कैन गिव यू द टेम्पलेट फॉर लाइक लेट्स जस्ट से 1 to 2 पोस्ट अ डे, यू डोंट नीड टू गो लाइक क्रेजी एंड बी एन इन्फ्लुएंसर आउट देयर, बट 1 से 2 पोस्ट अपने काम के बारे में बनाने, ताकि अगर कोई हमारी प्रोफाइल विजिट करे, जो कि करेगा जब तुम एक्टिवली नई जॉब के लिए जाना चाहोगे, these people look at your GitHub, these people look at your LinkedIn and nothing else, and your resume, yeah, that's the third thing। So we need to be posting about our own work, right? And वो हफ्ते का 1-2 पोस्ट is काफी, right? Even like doing 1 post a week, let's say, right? That's more than what 90% of LinkedIn users do anyways, right? So the idea is कि हमें इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, हमें बस अपना काम दिखाना है, हमें अपनी प्रेजेंस दिखानी है, that's number one। The second thing is, और हम लोग उसके टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं, you don't need even to think about it, right? इसमें माइंडसेट वाला एक चीज होता है कि यू नो हे मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे, मेरे बॉस क्या सोचेगा, मेरा यू नो ऑल दोस थिंग्स, बट नन ऑफ इट मैटर्स। एक दो बार मजाक उड़ाएंगे, बट यू नो यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट देन फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग, and you are aiming for better results consciously, so these things will happen and it's just normal। anything that you do जो कि आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं, they will point, they will poke you, and it's just totally fine। tell them this is why you're doing it, right? if you can, if you don't want to, don't do it, हंस के साइड हो जाओ। नेक्स्ट हफ्ते एक और पोस्ट देखेंगे तुम्हारा, फिर से बोलेंगे, कम लोग बोलेंगे, और फिर से तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते चुप हो जाएंगे, डजंट मैटर, राइट? अगर कंफर्टेबल हैं तो स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट ऑन द फर्स्ट, लाइक नेक्स्ट वीक कैन बी आवर फर्स्ट पोस्ट। द सेकंड थिंग इज डीएम्स, राइट? एंड डीएम्स इज समथिंग दैट नोबडी नोस, सो वी गोना डू इट मोर देन द पोस्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट? रोज के हम लोग शुरुआत कर सकते हैं 2 से 3 लोगों से, आई वुड रिकमेंड 5, बट 2 to 3 पीपल एवरी डे, लाइक रियली इन डेप्थ, बहुत रिसर्च्ड मैसेज अगर हम लोग कर सकते हैं, दैट विल बी रियली नाइस, and it can be a template, it doesn't need to be anything extraordinary। And then I'll give you those DMs, I'll give you those templates for content, I'll give you like everything that you need to start doing these things। And the third thing is LinkedIn पे तुम्हारी प्रोफाइल एकदम सेटअप होनी चाहिए। we need to know कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, LinkedIn and emails, right? we need to be nicely present that, that means email subject line क्या होनी चाहिए तुम्हारा, email Yaz Rocky rocks, it has to be professional, even if it's a personal one, it has to sound decent around your name, whatever, right? Subject lines क्या होनी चाहिए, email की body क्या होनी चाहिए, it has to like warm regards or thank you, and like we can think about the ways that you know we can get the fluff out, get to the main thing। cold email लिखना is not like it's not everybody's cup of tea, right? um, and that's what I'm trying to like say कि ये प्लेटफॉर्म इतना ही है, ईमेल बहुत छोटा चीज है, बट इतनी ही चीजों में खत्म हो जाता है, and that's we need to learn, that's number one। the second thing is LinkedIn। यहाँ पे प्रोफाइल बनाना is also sort of complicated, a lot of like messages that I get, or a lot of people that I see, they don't even have a profile photo, they don't even write their where they're working, उनका updated नहीं होता है कुछ, डेफिनेटली गिटहब की कोई लिंक नहीं होती है, बहुत कम लोगों की रहती है, पीपल और मे भी होती है तो वो तब की होती है जब उन्होंने नई जॉब ढूंढी थी, right? Like it's not updated, so we have to just update it। if anybody visits our profile, it needs to look like one of our resume, it needs to look like an updated resume of us, right? Where the only thing that they would need to is, hey, let me test his or her skills, nothing else। उसके पहले वाली चीजें, रिज्यूमे है, फिल्टरिंग है, वो सब ऑलरेडी सॉर्ट आउट होना चाहिए लिंक्डइन से, राइट? एंड देयर इज अ वे टू डू इट एज वेल, thousands of videos out there, not gonna talk about it। you just go on YouTube and say कि LinkedIn को कैसे प्रोफाइल सेटअप करना है, you will get a lot of things like how to set up a profile on LinkedIn, right? for coders you can be more, a little bit more specific, right? and the last two things, once you have these things set up, once you know these platforms, how these works, the only two things matters at the end of the day is how many DMs are you sending, which is the main thing on LinkedIn। how many deeper connections are you making, that's another form of saying how many DMs।
and then how many emails are you sending every day? These two things are the only thing that matters, nothing else, right? And then the third thing is content, which will bring you probably a top 5%, 2%, 3% of the people, right? If you start posting one post a day and you start DMing people, तो होगा क्या? तुमने किसी को DM किया, उसने अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखा, हम लोग ऑब्वियसली वो चीज ट्राई करेंगे टेम्पलेट में ट्राई कर लिखने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखा, उसने कहा अच्छा ये है कौन, वो तुम्हारी प्रोफाइल पे आएगा, तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा एंड वहां पे तुमने पोस्ट कर रखे होंगे एंड देन ही विल नो कि अच्छा ओके he knows what he knows and he knows how to talk about it, this guy is really interesting, probably don't have an open position for him at the moment, but let me accept his connection request, and वो थोड़ा कॉन्शियसली होगा, राइट? प्रॉबेबली पहले मैसेज पे जाके प्रोफाइल ना देखें, थर्ड पे देखें, फोर्थ पे देखें, बट वी नीड टू नो हाउ टू हैव दिस कन्वर्सेशन फॉर लाइक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ टाइम, and then we can keep a track of these people for future references as well. And we are trying to build a connection. We are trying not to get them by something, right? So the idea is कि जो great network marketers होते हैं ना, जो जिनको एक्चुअल में पैसा मिल रहा होता है लाइफ, और वो 1% होते हैं, probably आधा % होते हैं, राइट? 1000 में से कोई 2 लोग होंगे, that is like 0.2%, right? Even lesser than, very lesser than that. I don't know, maybe मैथ्स को क्या होगा, बट आइडिया है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअल थोड़ा बहुत इनकम आनी शुरू होती है, राइट? एंड उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत लॉन्ग टर्म होती है, दे विल नेवर पिच यू एनीथिंग ऑन द फर्स्ट कॉल और फर्स्ट मैसेज, और दे ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन। तो कोई पुराना स्कूल फ्रेंड जो 6th में कहीं ट्रांसफर हो गया था, वो अप्रोच करेगा तुम्हें, और भाई क्या हाल चाल है, बट लाइक यू नो याद आ रही थी, चलो बात करते हैं, देन 2 मंथ्स की कन्वर्सेशन के बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग की चीज निकल के आएगी, एंड इट हैज हैपेंड, पीपल डू इट वेरी डेलिबरेटली, राइट? एंड उन्हीं को सक्सेस मिलती है, नॉट द पीपल हु गेट्स टू देयर लाइक मनी मेकिंग स्टफ ऑन द फर्स्ट कॉल और द सेकंड कॉल और द थर्ड कॉल, राइट? यू वुड नो कि वो ब्लफ कर रहे थे, उनका मोटिव यही था, बट अगर कोई 2 महीने बाद रैंडमली, अच्छा 2 महीने तक बात हुई, एक कॉल हुआ, 2 कॉल हुई, फिर एक दूसरे को मीम्स भेजे जा रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, एंड देन वंस एक बार कभी मेंशन कर दिया, अच्छा मैंने लाइक यू नो आई एम डूइंग दिस, आई मेक दिस मच, लाइक हाउ मच डू यू अर्न, वेयर डू यू वर्क, सो रैंडम कन्वर्सेशंस हो गई, वो उस कन्वर्सेशन को ध्यान रखेगा, उसके 2 महीने बाद लाइक प्रोबब्ली ही वुड से कि यू नो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, आई एम, एंड दैट्स दोस आर द पीपल हु एक्चुअली मेक मनी, राइट? एंड those are the two things we're gonna do. If we need the job in next 60 days, we're gonna come to the point. We're not gonna think about the no's. We're gonna be like really shameless. हम लोग बस लोगों से डायरेक्टली पूछेंगे, तुमने जॉब के लिए डाला था, मैं ये बंदा हूँ, I would want that job. Do you mind having my resume in front of you in the next morning you go to the office? We can think about the message, but this is what we're gonna do. And those are the 60 people, 100 people, the list that we are making, right? Next people that we're gonna reach out for the direct transaction, right? It could be that, but if you don't find it and if you don't know it, and if even the people that you're finding don't have any opportunity, it's fine, we're going to still build connections, because आज नहीं तो कल they will have an opportunity, and probably हमारे पास, हमारी टीम में, हम लोग उनसे like better positions में हैं, junior हैं, वो लोग हमारे junior हैं, it's fine, we get into the better position, we have an opening in the company, we invite them to join us, could happen, right? 2 साल बाद, 1 साल बाद, they are in the connection, and they reach out to you, and that's fine, you know, you start building that goodwill over time. So idea is कि हम लोग को कुछ चाहिए, I know, but don't become a door-to-door salesman कि हाँ है कुछ खरीद